ma'am. Good morning, 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 ma'am. ये सब बाहर निकलेंगे। उधर सवाल यहाँ जाएगा। Good morning, ma'am. क्या कर रहा है? फोन खराब हो जाएगा। My personal number. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. My English ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, good morning everyone. Good morning बेटा. Yes. आज आपका टेस्ट है ना? आज आपका टेस्ट है, तो आपने अपनी शीट रेडी कर ली है कि नहीं की है? जल्दी से डेट वगैरह लिख लीजिए उस पे। कुछ आंसर नंबर 1, 2, 3 लिख लीजिए। गुड मॉर्निंग सौम्या, पंखुड़ी। Arpit, why are you lying on the bed? Arpit, sit properly. Sachi. Mukul. Advita. Himansh, what are you doing, beta? Himansh, sit properly, everyone. What happened, Adia? Why are you raising your hand? Yes, Adia. Ma'am, today the literature test still. Yes. Ma'am, which chapter? शेखीबाज मक्खी, चैप्टर 2। आपको मंडे को आया नहीं था होमवर्क में? ओके। रिजक, मानस, Manas, sit properly. Where are you? Kartavya. Avarpal. Arush. Advika. Sit properly, beta. Anshdeep. I have to see each and every one. Kevaljeet.
ओके, तो आपको पता है ना कि टेस्ट कैसे देना होता है। 1 बाय 1 मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगी, ठीक है, उनके आपको क्या करना है, आंसर लिखने हैं। ओके, आंसर लिखने के बाद आंसर जैसे फिनिश होंगे केवल आपको आंसर ही लिखना है। ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, केवल आंसर ही लिखना है, 1 वर्ड में या कुछ भी है, जैसा भी दिया गया है, ठीक है। और जल्दी, नो विवान, बहुत इजी है, आप दे दोगे, इतना कोई टफ नहीं बनाया मैंने पेपर, ठीक है। ओके एवरीवन, आई विल स्टार्ट टेस्ट आफ्टर 3 minutes, ओके। कैमरा जिनका ऑफ है ऑन कर लीजिए। आद्या, अर्नव, पार्थ गोयल, सिया, आशनूर, आकर्ष, इनका तो ऑडियो ही नहीं कनेक्ट है। ओके रक्षित, यस रक्षित, यस मैम, हाँ जी, मैम द टेस्ट ऑन मंडे, हाँ मैम द टेस्ट वाज ऑन मंडे। नो बेटा, मंडे को टेस्ट, आप क्या पूछ रहे हो, टेस्ट मंडे को लेना है, आज ही था, मंडे को तो था ही, आज के लिए भी बोला था, ठीक है। मंडे को टेस्ट है मैम, ये तो मंडे को टेस्ट था। नहीं नहीं, आज था, मंडे को तो हो चुका। हाँ, चैप्टर 2 का आज था। वीक में 2 ही डेज तो होते हैं आपकी क्लास, आप दूसरा वाला हिंदी का सोच रहे होगे, ठीक है। ओके एवरीवन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टेस्ट। और जो मंडे को आपने टेस्ट दिया था उसके अभी मैंने मार्क्स किसी को नहीं बताए हैं, ठीक है। आज शाम तक सबको मार्क्स बता दूंगी, ठीक है, दोनों टेस्ट के। सो डोंट वरी, आई आई हैव अनदर वर्क, so I could not send you marks. Okay. All are ready? Yes. I'm going to show you first question from chapter 2. You can see, मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? प्रश्न एक है, मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? पहला, प्रणाम करने के लिए, भाग जाने के लिए, या कुछ नहीं कहा? You have to write only answer. Write down fast. Nobody will look here and there. Look only on the screen of your phone.
मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? प्रणाम करने के लिए, भाग जाने के लिए, या कुछ नहीं कहा? जल्दी से लिखिए। मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? प्रणाम करने के लिए, भाग जाने के लिए, या कुछ नहीं? रक्षित, why are you crying बेटा? मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? प्रणाम करने के लिए, भाग जाने के लिए, या कुछ नहीं? आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिटन। बेटा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अगर बीच में लीव हो जाता है, nobody will raise the hand. अगर आपका एक भी क्वेश्चन लीव हो जाता है तो किसी भी वजह से या नेटवर्क इशू के वजह से कुछ भी, तो आप जो भी क्वेश्चन मैं शो कर रही हूँ उसका ही आंसर लिख दीजिएगा, आंसर नंबर करेक्ट डाल के। ओके, नाउ आई एम शोइंग सेकंड क्वेश्चन। मक्खी किसमें फंस गई थी? मक्खी किसमें फंस गई थी? घर में, जाल में, या बाल में? मक्खी किसमें फंस गई थी? घर में, जाल में, या बाल में? जल्दी से आंसर लिखिए, आंसर नंबर 2, और जो भी ऑप्शन राइट है उस ऑप्शन को लिख दीजिए। आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन। मक्खी किसमें फंस गई थी? घर में, जाल में, या बाल में? ओके, now I am going to show third question. शेर जंगल में क्या कर रहा था? शेर जंगल में क्या कर रहा था? सैर कर रहा था, घूम रहा था, आराम कर रहा था? शेर जंगल में क्या कर रहा था? सैर कर रहा था, घूम रहा था, या आराम कर रहा था?
शेर जंगल में क्या कर रहा था? Nobody will raise the hand in between. शेर जंगल में सैर कर रहा था, घूम रहा था या आराम कर रहा था? राइट डाउन फास्ट. You have to write only answer. I'm repeating these words again and again. Don't write any type of question. कोई बात नहीं आकाश, आप जहां से देख रहे हो वहां से कर लीजिए, ठीक है? मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगी. आकाश, आप जहां से देख रहे हैं वहां से कर लीजिए. मैं लास्ट में रिपीट करूंगी सारे क्वेश्चंस, तब आप कर लेना. आकाश से कह रही हूँ मैं, जहां से दिखा शो हो रहा है वहीं से कर लीजिए, बाद में रिपीट कर दूंगी, आप बाद में कर लेना, स्पेस छोड़ दीजिए 1 और 2 क्वेश्चन का. ओके ओके. लास्ट टाइम अगेन. शेर जंगल में क्या कर रहा था? सैर कर रहा था, घूम रहा था, आराम कर रहा था. नाउ I think you all have written. Question number 4. थक कर शेर ने क्या कहा? जब शेर थक गया तब उसने क्या कहा? चुप हो जा, ये कहा. मैं हारा तुम जीती, या मैं जीता तुम हारी? थक कर शेर ने क्या कहा? थक कर शेर ने क्या कहा? पहला है चुप हो जा, मैं हारा तुम जीती, या मैं जीता तुम हारी? जल्दी से लिखिए आंसर. थक कर शेर ने क्या कहा? चुप हो जा, मैं हारा तुम जीती, मैं जीता तुम हारी? जल्दी से आंसर लिखिए इसका. ओके रक्षित. नैतिक, अभी मैं आपको कुछ भी आंसर नहीं कर सकती. नैतिक, अभी टेस्ट हो रहा है. इन बिटवीन नो क्वेरी विल बी एक्सेप्टेड.
ओके खुशी, जल्दी से करिए। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी को क्या हुआ? लोमड़ी की जब बात सुनी मक्खी ने तो उसे क्या हुआ? वो खुशी से लाल हो गई, वो क्रोध से लाल हो गई, वो दुख से लाल हो गई? बताइए। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी को क्या हुआ? वो खुशी से लाल हो गई, वह क्रोध से लाल हो गई थी, वो दुख से लाल हो उठी। जल्दी से। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी को क्या हुआ? वो खुशी से लाल हो उठी, वो क्रोध से लाल हो उठी, या वह दुख से लाल हो उठी? जपलीन, बेटा जहां से शो कर रही हूँ वहां से लिख लीजिए आंसर नंबर डाल के। बाकी के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। अभी दोबारा से रिपीट करूंगी। राइट डाउन फास्ट। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी को क्या हुआ? वो दुख से खुशी से लाल हो उठी, वो क्रोध से लाल हो उठी, या वह दुख से लाल हो उठी? जल्दी से आंसर लिखिए। क्रोध। क्रोध का अर्थ सभी को पता है। चलिए, ओके, नाउ आंसर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी। मंद मंद का अर्थ क्या होता है? मंद मंद का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी, तेज तेज, या धीरे धीरे? मंद मंद का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी, तेज तेज, या धीरे धीरे? जल्दी से लिखिए। मंद मंद का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी, तेज तेज, या धीरे धीरे? जल्दी से लिखिए आंसर। मंद मंद का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी, तेज तेज, या धीरे धीरे? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो क्वेश्चन नंबर 7। मुश्किल का अर्थ क्या होता है? चोटिल,
कठिनाई या साहस। मुश्किल का अर्थ क्या होता है? जल्दी से लिखिए, वन वर्ड है ओनली। चोटिल, कठिनाई या साहस। जैसे ही आपका 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वैसे ही आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हैं शीट को। Nobody will send these sheets on the group. मुश्किल का अर्थ क्या होता है? ये शब्द अर्थ में से है चोटिल, कठिनाई या साहस। शब्द अर्थ का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। मुश्किल का अर्थ क्या होता है? चोटिल, कठिनाई या साहस। लिख लिया होगा आपने। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अंत में मक्खी का क्या हुआ? अंत में मक्खी का क्या हुआ? जाल में फंसकर हार गई, दूसरा जीत गई या भाग गई? अंत में मक्खी का क्या हुआ? जाल में फंसकर हार गई, जीत गई या भाग गई? अंत में मक्खी का क्या हुआ? जाल में फंसकर हार गई, जीत गई या भाग गई? जल्दी से करिए। आई थिंक यू हैव डन। नाउ वाक्य प्रयोग है 9th क्वेश्चन। वाक्य में प्रयोग करना है मंद मंद। मंद मंद का वाक्य में प्रयोग करिए और विशालकाय का। नंबर 10 विशालकाय। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए ताकि जब तक कि मैं बाकी स्टार्टिंग से बच्चों को रिपीट कर दूं। मंद मंद और विशालकाय दोनों नोट कर लीजिए जल्दी से। इनका वाक्य में प्रयोग करना है। मंद मंद, विशालकाय। इनको नोट कर लीजिए बेटा, फिर आराम से वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुत शॉर्ट सा वाक्य प्रयोग था इनका जो मैंने लिखवाया था। नोट कर लीजिए। नंबर 9 पे मंद मंद और 10 पे विशालकाय। Now I'm going to repeat all the questions once again. So pay attention. Akash. Question number 1 was मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? प्रणाम करने के लिए, भाग जाने के लिए या कुछ नहीं कहा? मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? प्रणाम करने के लिए, भाग जाने के लिए या कुछ नहीं कहा? जल्दी से लिखिए। नंबर 2, मक्खी किसमें फंस गई थी? घर में, जाल में या बाल में? मक्खी किसमें फंस गई थी? घर में, जाल में या बाल में? नंबर 3,
शेर जंगल में क्या कर रहा था? सैर कर रहा था, घूम रहा था, आराम कर रहा था। थक कर शेर ने क्या कहा? चुप हो जा, मैं हारा तुम जीती, मैं जीता तुम हारी। लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी को क्या हुआ? वो खुशी से लाल हो उठी, वो क्रोध से लाल हो उठी, या वो दुख से लाल हो उठी? मंद मंद का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी, तेज तेज, या धीरे धीरे? मुश्किल का अर्थ क्या होता है? चोटिल, कठिनाई, या साहस? अंत में मक्खी का क्या हुआ? जाल में फंसकर हार गई, जीत गई, या भाग गई? जाल में फंसकर हार गई, जीत गई, या भाग गई? वाक्य प्रयोग मंद मंद और विशालकाय। I think you have done. Some students sheets. Some students are sending their sheets. WhatsApp. Good. Okay. Okay, everyone. Now, time also over. Test is also over. Yes, everyone. I think you have enjoyed your test. Yes, Vivan. The first question was मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? प्रणाम करने के लिए, भाग जाने के लिए, या कुछ नहीं? बस मैं ऐसे ही आपको बता सकती हूँ। वरदायिनी। ओके। प्रणाम करने के लिए, भाग जाने के लिए, या कुछ नहीं कहा? वरदायिनी। This is first question. Do fast. Okay, everyone. I'm leaving.
Good morning, everyone. Good morning, everyone. Now you can unmute and Good morning, ma'am. 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 How are you, ma'am? Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. good. Nice Good to morning, hear. ma'am. Good morning, ma'am. Fine. Nice to hear your response. Everybody is looking energetic today. Everybody ready for the revision? Everybody turn on your videos. Kartavya Arora, I can see your fan, but can't you? Yes, everybody has to turn the videos on. Tanmay, Parth, and who is this? Joban Sandhu? Ikra, turn on your video. Every time your video is off. Anshdeep, Anit, Risha, Advita, turn on your videos. Okay, fine. So, let's revise the previous words fast. Okay, start sending me. Already many of you have sent something. Start sending me the words which we have done. The chat is enabled for everyone. Everyone can see the chat. Start sending the words which we have done yet. Fast, 5-minute exercise. Do it fast. Adorable, yes, Darshika. Mannat, adorable, yes, Sabha. ये तो same word हो गया, अब new दो. And Sabha, this is spelling is wrong of adorable. Scrumptious, yes, Darshika. Pranjali, adorable. Japleen, Manas. Japleen, adorable spelling is wrong. Everybody is writing adorable wrong. Why? Wait, everyone. I am sending you the spelling of adorable. At least 5 students have written wrong spelling of adorable. Oh, this has gone to Vivan only. Affable, right? Darshika, good. Akshat Singh, 310. What is this? Mysore, very nice. Soumya, good. Passionate, passionate. Rizak Jot, nice, but the spelling of passionate is wrong. Pranjali has written the correct spelling. Affable, passionate, adorable, Mysore, good. Disclose, disclose, reveal, right. Horrible, good. Scrumptious, fine, good. That means you people remember. Beta, Akshat, reveal. Spelling of reveal is R-E-V-E-A-L. Okay? Himansh, which background you have chosen? Risha, Arpit, Adra, nice. I have got all answers. choose. Huh? मैं बातें कुछ पाई पीछे रहती बात में हमें उठा के यहाँ लगा दी. Okay. Okay. But this is your class. According to me, such background should not be there. Understood, Himansh? After this class, when you'll get the time, please change it. Yes, Akarsh, imitate. Right. Imitate word was missed by you all. Imitate means to copy someone. Okay? Fine. So, what is the word of the day? Acha, who is this Joban Sandhu? Please turn your video on. This is Acha, read Sandhu. Okay. Read. Your name is not there, na? Otherwise, how I will mark the attendance? Okay? Okay, fine. Now I'm giving you the word of the day. The word of the day is. Wait. What is
here first of all. Lot of disturbance there in your background. Frown. Everybody check out. I have sent you a word. Frown. Got? Word of the day is frown. And the spelling is F-R-O-W-N. Right? Frown means it's like a facial expression in which we do like this. We we used to make facial expressions through our eyebrows, doing like this. Like abhi a lot of disturbance was there, so how I was doing like this. Okay, not like this. Arsh ऐसे ऊपर ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा showing the anger kind of. ठीक है, and disapproval. कोई चीज होती है ना हमें अच्छी नहीं लगती, we don't like some of the things, then we used to do like this. What is this? है ना? We used to say go from here. In these kinds of things we used to frown. Avantika, my voice is not clear. You have sent the message. Everyone, am I audible properly? Show me thumbs up. Okay, to Advita, Darshika, Arohi, these many I am audible. Avantika, there might be some connectivity issues from your side. Okay, network issues, right? Okay, I have seen the response of many people. Fine. Acha, now frown means to indicate something. Kuch, like suppose when you people misbehave in the class, okay, when you don't behave properly, you make a lot of noises. I used to frown na, main se karti thi, be quiet everyone, right? So this is, let me write its meaning here. Let me send you its meaning. You can note down its meaning. I know its meaning is a little long. Disapproval. I'm sending you. I can't see it. Why, Jacqueline? What you can't see? To bring you, I'm sending you another meaning. That was the tough one now. So I'm sending you one more meaning. To bring your eyebrows together. ठीक है, like ऐसे करना. To bring your eyebrows together. Together so that there are lines. Abhi I'm sending you this much only. Got the meaning? Check out everyone and please note down somewhere. Arsh, sit properly. Okay, everybody noted down the word and its meaning also. Now, let me give you one example of its sentence. Okay. I can take any name from here. Arshnoor's father frowns at her when she misbehaved in the party. When Arshnoor misbehaved in the party, when she was not behaving properly, Arshnoor's father frown at her. Frown means होता है गुस्सा दिखाना, ऐसे eyebrows ऐसे करके expression to show the
expression. Yes, Medhavi has sent to bring your eyebrows together like this. Okay, so that lines appear here. Basically, our parents used to do when we are doing something wrong. Okay, now I am sharing my screen. Who is saying please start the class? Test. Adya, first of all, it's a revision, right? Remember, I said for the revision, but still I will take it as a test only. Let me share my screen. First of all, I am going to give you a quick revision for 5 minutes. After that, I am going to ask some questions. See, in our explanation part, I explained the words which end with consonant. है ना? There we used to add only S. I'm opening the worksheet. I hope it's visible. Stop doing this. It's visible, right? Anshdeep, stop doing. Manas, you know I'll remove you from my class. Avantika is still doing. Very good. Spoil the screen. Advika Narang. I think you have done this before, but on my screen it's showing now. Okay, everyone. See, we will revise it fast. You know, this is the last chance. I'll remove you from my class. Those who are going to annotate on the screen. Those who are going to write anything on the screen or spoil the screen, I'll remove you from my class. I'll not hesitate to remove you. Understood, everyone? Vardaini, please leave the class. Wait, let me remove you. Shall I remove you, Vardaini? Unmute yourself. मैंने कुछ किया भी नहीं। आपने कुछ नहीं किया था, but on my screen you spoiled it. Fine, now nobody will do this. Don't compel me to do this, beta. I never want to scold you like this. Fine, fast, let's have a glance over here. First rule was the words which end with the consonants. Still, who is doing this? Advika Narang, beta, you go. Leave. Kahan hai Advika Narang? You don't wish to stay in the class? Then leave the class. Where are you, Advika? I am removing you from the class. Advika Narang, turn on your video. I have sent you in the waiting room. Yes, the nouns which end with the consonants, in those we used to put S. We used to add S, like balloon. Balloon is ending with the N. N is the consonant. So we will add S to it. Okay, everyone, please listen carefully. In the same way, you can see many words here.
like present, presents, friend, friends, right? And some exceptions are also there, like you can see on 9th number, office, right? Office is ending with E, but still we used to add S. There are some exceptions. Fine, so we have to learn these things. Understand also. The second rule was that we add es to some nouns that end in o, single s, double s, ch and x. That means those who are ending with the hissing sound. Do you remember? I explained the words which are ending with the hissing sound, like class, bus, bush. The words which are ending with the hissing sound. Hissing is the sound of the snake. Everyone, right? So the words which are ending with the hissing sound and with the letter O, what we will do in that, we will add es to it. Okay, abhi I'll ask questions to everyone. Please everyone see this carefully. This is a quick revision. Fine. So here many examples are given for bench. Ch is also a hissing sound. Wish, hero, dress. What will be done here? In all these words, we will add es. Okay? Benches, wishes, heroes, dresses, like this. Okay? Understood? This much was the sheet for day 1. I hope this much is clear to everyone. Now let me share the another sheet. Now another sheet, everybody visible to you. Next rule, the words which are ending with Y. Okay, but for this also we have a rule. If the word which is ending with Y, but before Y से पहले क्या लगाए? Consonant. ठीक है, तो वो किस में convert होगा? IES. Okay, read out the first rule here. I am putting the spotlight. See, if the letter before the Y is consonant, अगर Y से पहले, जैसे baby में BABY, Y से पहले consonant है ना, तो ये किस में convert होगा? IES में. We will remove Y, we will add IES. ठीक? You can't see the screen. Wait, I am sharing again. Why you were not able to see the screen? I am sharing again. Okay. Now it's visible. Show me thumbs up. Okay, fine. I hope now it's visible to everybody. Fine. Now I'm telling from the beginning. This is the rule. If the letter before the Y is consonant, like here in baby, before Y there is a consonant. B is a consonant. So what will be done here? We will remove Y and we will add IES. Okay. In the same way, city. Tanmay, stop doing. Fine. The next rule is if the letter before Y is a vowel, then what we will do? Only S is added, like keys, boys, like toy is there, TOY, toy. Then toy में क्या होता है? Toys. Okay. So many examples are given here. Fine. Now I am stop sharing. Now I will ask questions from you. Okay. Who wants to drink water? Yes, Zeerat, please go.
Everyone, now can you see the screen? Fine. Sanraj. Fast. Sanraj, why you are taking a long? Vivan, you want to bring your water? What you are doing before 10 minutes? Sanraj, unmute yourself. Don't you know for answering you have to unmute? From my side, you are unmute, Sanraj. Leave it. Fine. Kevaljeet, you tell me the plural of dog along with the spelling. Ma'am, your screen is not visible. My screen is not visible, but at least you can tell me the plural of dog. I am asking time and again. Now it's visible, Kevaljeet. Beta, today there are a lot of network issues actually. Pranjali, Yes, ma'am. am I audible? Yes, ma'am. Okay, then tell me the plural of bench. Benches. Spelling? BANCHES. BENCHES. Okay, good. Huh? This is the correct spelling. Okay, listen. Do take care of spellings. If these things are going to come in the form of multiple choice questions, if I am giving you 4 examples, okay, 4 options, then please take care of the spellings. Okay? Arohi, tell me the plural of potato. And those speak Arohi. You want to spoil the screen? पहले आप spoil कर दो अच्छे से. I'm waiting. Man, potatoes. Arohi. Potatoes. Spelling. Potatoes, ma'am. Beta, spelling. POTATOS. Achha, Divyansh, why you are sending this me? Himansh, tell me the plural of dress along with the spelling. This is ERE+ES. Good. Now mute yourself. Okay, good. Pihu, tell me the plural of box. Ma'am, boxes. Spelling. Boxes. Spelling.
BOXES. Okay, now Khushi, Yes, ma'am. tell me the plural of brush along with the Brushing. spelling. Spelling. BRUSHES. Okay, good. Now mute yourself. Akash, tell me the plural of church. CHEURCHES. बेटा आपने क्या बोला? CHE. Did you say CHE? No, C- ma'am. Okay, okay. I heard CHE. It's CHURCH. Church, churches. ES. Fine. Good. Good. Now mute yourself. Pankudi. Pankudi, tell me the plural of glass. Pankudi, are you there? Abhi to you were there. Arsh, you tell me the plural of glass. Unmute yourself, Arsh. Beta, you are taking a lot of time in unmuting yourself. Risha, why you are saying I have never seen you? Antra? Antra, am I audible? Yes. Antra, tell me the plural of bus. Buses. Spelling. BUSES. Yes. BUSES. Fine. Good. Everyone, please do take care of your spellings. Because if your spelling will be wrong, I'll cut your marks. Mukul Joshi, tell me the plural of dish. Dish. DISHES. Dishes. Okay, good. Now mute yourself. Natik. Natik, are you there? Natik, are you there? Tell me the knife. Plural of knife. Nice. Knife, knife. KNIFE. Leaves. Fast. Tell me, नहीं आता आपको? Okay, keep waiting. Let me ask to others. Avarpal? Avarpal? Yes, ma'am. Tell me the plural of knife. Ma'am, knives. Knives. Spelling? KNIFE. No. No. KNIFE. FES nahi beta. FE, when we will remove FE, we will add VES. Okay? Knives. KNIVES. Look here, I am writing the spelling. Can you see on my screen? Yes. Knives. VES. Okay? Okay, ma'am. Take care for the next time, okay? Ziratpreet, Yes, ma'am. tell me the plural of leaf. Yes, ma'am. Plural of leaf, beta. LEAFVES. Leaves.
अच्छा, जब आप VES ऐड कर रहे हो बेटा, वी विल रिमूव F, ठीक है, देन ओनली वी विल ऐड VES. F के साथ VES नहीं आएगा. Understood? Writing the spelling here. Look at this. Leaves. LEAVES. Understood? Okay, ma'am. Naitik Arora, now you tell me understood? Hello. Naitik Arora, Yes, ma'am. understood? Because you were not able to give the answer. Naitik, tell me. Yes, ma'am. F remove करते हैं, then what do we add? Understood? Yes. Okay. Please do take care for the next time. Okay. Now we have Tanmay. Tanmay, am I audible? Tell me the plural of calf. Can you see it? Second number. Calf. Yes. Tell me this plural and spelling. Spelling. CALFES. No. VS. Yes, Tanmay, this is what I am telling you since last 10 minutes. Calves. CALVES. What will be the answer? CALVES. Yes, I have written. Check out the spelling. ठीक है, CALVES. Okay, fine. Parth Goyal, section B. Parth Goyal. Parth, are you there? Yes, Tell me the ma'am. plural of thief on number 1. Can you see number 1, thief? Ma'am. VES, right, good. THIEVES. What we will do, we will remove V and add VES. Sabha, wait, beta, wait. I will ask you, wait. Darshika, tell me of loaf. Leaves. Tell me the plural of loaf. Ma'am, leaves. Beta, loaf, plural of loaf. मैंने बिल्कुल को ओपन करके मत करना क्वेश्चन. मैंने Parth Goyal, you are not paying attention here, I know. है ना? Darshika, spelling beta. LOAVES. Very nice. LOAVES. Good. Right answer. Fine. Manav Gumbar. Manav Gumbar. On number 4, wolf. Tell me the plural of wolf. Manav Gumbar, am I audible? Okay. Sartaj, am I audible? I can only Yes, see ma'am. you, Sartaj. Sartaj, tell me the plural of wolf. Sartaj, why you are muting yourself? Abhi you were unmute. Tell me the plural of wolf. Sabha, if you will say like this, me, I will not ask you. Sorry. Sartaj, give me the answer. Plural Ma'am. of wolf. Yes. Plural of Plural of wolf. WOLF. okay. On number 4 written here. See. Yes, ma'am. Speak fast.
Ma'am, wolves. Spelling. WOLF. VES. Very bad, Sartaj. Not expected from you. Vivan, tell me the correct spelling of wolves. WOLVES. Okay, tell me the plural of wife. Wife. Wives. Spelling. WIVES. Okay, Abhya, tell me the plural of elf. What, ma'am? Plural of elf. The last word on my screen. Can you see? Yes, ma'am. Tell me its Ma'am, plural. ELVES. Okay, good. Very nice. Fine. Rakshit. Rakshit, am I audible? Okay, now tell me the plural of fairy. I hope in my screen it was visible. FAIRIES. Yes, FAIRIES, because whenever we remove Y, we used to add IES. ठीक? Okay, now fast, last 2-3 minutes are there. Mohak. Mohak. बोलो Are yes you ma'am. there, Mohak? Yes, ma'am. Tell me the plural of lady. LADIES. Very good. Midhavi, tell me the plural of baby. Ma'am, plural of baby. Yes. Baby. Huh? Babies. Baby's spelling. BABYS. No, wrong. BABIES. Somebody is telling you, right? Okay. Arpit, tell me the plural of a story. Yes, ma'am. Plural of a story. STOR. तो बोलो आप बोलो. STORIES. Ma'am, yes. Plural of story. क्या लिखा हमने? क्या करूँ? Fine. हेलो. Those who are unmute, mute yourself. STORIES. Okay. Fine. Now, Arpit, mute yourself. Fine. Those who are left, let me ask. Yes, ma'am. Sabah, tell me the plural of cherry. CHERRIES. Very good. Nice. Rizak Jot, tell me the plural of city. Cities. 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 Yes, CITIES, because when we will remove Y, we will add IES. Advita, tell me the plural of army. ARM. Rest of you unmute yourself, only Advita will give the ARMIES. answer. Yes, armies. Good. Fine. Now, few more. Now let me ask to those who are left. Okay. Kevaljeet, you have not given the answer. Kevaljeet, tell me the plural of man on number 2. Mans. Mans.
Spelling? MEN. MEN, right. Mans नहीं होगा, MEN, men हो जाएगा. Some words are there whose whole spelling is changed. Okay. Akshar, tell me the plural of woman. Man. MEN. Ah, right. I have got the answer. But Kevalji, take care because the first time you gave the wrong answer. Akshar, tell me the plural of woman. Woman. Yes. WOMEN. Good. Very nice. Acha, now who is left? Raise your hand. Now Risha is left. Because Risha, where is she? Arshnur be left. Arshnur, tell me the plural of foot. Arshnur, am I audible? Am I audible, Arshnur? I guess she is disconnected. Okay.